Marg. Welcome Naveen Bhargava ji. Welcome to Bharat Marg. I am so happy that you are here from Aryan's Vedic Mathematics School, friends. He's the MD of it and one of the fastest growing franchises in Vedic Mathematics. Being a busy person, he takes his time to do the seva with us, and we want to highly appreciate it. You know, नवीन जी, आपके बारे में 1 मिनट अपने दर्शकों के लिए बोलिएगा. आप यू आर अ वेरी अकम्प्लिश्ड मैन इन वैदिक मैथमेटिक्स. क्या कर चुके हैं, आपका परिचय जरा दीजिए 1-1.5 मिनट में. I am Naveen Bhargava. Basically, I am from Varanasi, but from 2004 I am here in Jaipur. So मेरे को इसकी नॉलेज जो है काफ़ी पहले से थी कि एक इस तरीके का सिस्टम है जो विच इज़ मच मोर बेटर देन द ट्रेडिशनल वे. ठीक है, तो इसमें मैं करीब जब मैं आई थिंक 7-8 इयर्स का था तब मेरे को फर्स्ट टाइम एक BHU के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनसे थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में पता चला था. तो तब से ही मेरे को बहुत इंटरेस्ट था ये सारी चीज़ें करने में. तो एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप जितनी डिस्कवरी करते हैं आपको उतनी नई चीज़ें मिलती हैं. तो मैंने देखा जो वैदिक मैथ्स है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिसिंग थी. बिकॉज अभी जो वैदिक मैथ्स जो हम लोग जानते हैं दैट वाज मतलब ऑल द वर्क वाज डन बाय भारती कृष्ण जी इन 19th सेंचुरी. बट ये जो वैदिक मैथ्स है ये डिस्कवर की थी करीब 4000 इयर्स बैक बाय आवर ऋषि मुनीस. ठीक है, तो उन्होंने जो वर्क किया था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ संस्कृत टेक्स्ट. तो भारती कृष्ण जी ने उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. बट हमारे वेदों पे डायरेक्टली किसी ने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया था. ठीक है, बट मैंने उस पर थोड़ा सा ही रिसर्च किया, लेकिन उससे मेरे को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिली. ठीक है, कि जो इसमें बहुत ज़रूरी थी. एंड दैट्स वाई कि अभी जो हम लोग ये इसको करते हैं तो मतलब एक होता है ना जितने इसमें जैसे लीनियर इक्वेशंस एक टॉपिक है, इसमें टोटल देयर आर 7 फॉर्मूलाज. लेकिन ये सारे हाँ बोलिए. हाँ जी, तो मैं बता रहा था ये 7 फॉर्मूला सीखने के बाद भी करीब 20% के आसपास ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते थे. तो मैंने कहा ये ऐसा तो नहीं चल सकता कि अगर हम कुछ पार्ट कराएं. तो देन आई वर्क ऑन इट एंड देन आई फाउंड कि नहीं पूरा 100% इससे कर सकते हैं. तो उसमें एक और फॉर्मूले हैं अपार्ट फ्रॉम 16 दैट वर्ड फॉर्मूलाज. वाओ. So you represent the government also at times, going out and doing the work. Say us about it, because I want the people to know who they are talking to. Okay, that's my idea. Because you are just not a nobody. You are running a very successful Vedic mathematics class course in from Jaipur, and also a lot of franchises coming out. And you are taking time and doing it here. So I just want to appreciate this moment. That's okay. Thank you. Please. आप गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी? हाँ बिल्कुल. ये 2018 में हमारी मीटिंग हुई थी, मतलब हमारी विजिट हुई थी थाईलैंड में. Then they have implemented this particular course in their curriculum. And this is the first course of Vedic mathematics which is implemented by some government. Okay. Find it very useful. They have visited more than 45 countries, but they were not satisfied with anybody. Yeah. Awesome. फिर हमारे से मीटिंग हुई, उसके तुरंत बाद जो है इन्होंने तुरंत ये अपॉर्चुनिटी दी थी. Awesome. जस्ट ट्रेन किया. नवीन जी, मैं आपसे ये एक सवाल पूछूंगा, ये मेरा जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ. ओके, ऐसा नहीं कि मैं सवाल ज्यादा पूछ रहा हूँ. आपका तो कोर्स लेंगे अभी. मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को भी पता हो जाए. हम सुन चुके हैं जैसा मेरा गांव से आ रहे हैं मैथमेटिशियन रामानुजन. ओके, मैं उन्हीं का स्कूल में गया था. मगर मैं ऐसा निकला
इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। वो तो मैथमेटिशियन थे, हम तो उससे बहुत दूर रहे, ओके। फिर भी वो ये बोला जाता था कि रामानुजम बहुत तुरंत ऐसा ऐसा जवाब दे देते थे, मैथमेटिक्स यू कैन सॉल्व लाइक दिस। वन एग्जांपल आई विल से, वी हैव डन अ वीडियो ऑन इट। One gentleman comes with a car and he says, my I have a very unusual number for my number plate for my car, so he says, this is the number I'm not very happy with. He says, why are you not happy? This is the Yeah, 1729. It right, was right, right. 1729. Yeah. Do you mean to say he also used Vedic mathematics? He could have used Vedic mathematics. What is your thought on it? Yeah, I think not that Vedic mathematics that is written in Vedas. Maybe he has find the way using which they have found all these system around 4000 years back. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट। और दूसरा क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ थोड़ी बहुत इसकी वैदिक की भी नॉलेज हो, क्योंकि बेसिकली वैदिक क्या वो है तो जो पूजा पाठ हमारे, करने वाले थे, हाँ ऐसा तो वो बेसिकली क्या पूजा है, पाठ करने वाले हाँ फैमिली से थे। नहीं, हाँ मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे एक शकुंतला देवी जी भी थी, ठीक है। हाँ जी। एट द एज ऑफ 5 years उन्होंने जो है 12 डिजिट 9 डिजिट का क्यूब रूट निकाला था, जो आज की डेट का कोई भी मैथमेटिशियन नहीं निकाल सकता। तो दैट वाज वाह। नॉट वैदिक मैथ्स। वहां पे कुछ को क्या होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है। तो रामानुजन वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स की, कुछ तो उनका गॉड गिवन था और कुछ उन्होंने उसी वे में वर्क किया जहाँ पे हमारे ऋषि मुनीज ने उसको लिखा, फिर उसमें अथर्ववेद में हाँ 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 हाँ। उन्होंने और और ओरिजिनल से उस पे हाँ वर्क जी, किया है। हाँ जी, हाँ जी। और ये बोला गया था रामानुजम जी के बारे में, मैथमेटिशियन रामानुजम के बारे में, हाँ जी, उनका ऊपर एक कंप्लेंट था। वो बोल रहे थे कि स्पेशली गोरे लोग बोल रहे थे, विद द व्हाइट्स वर टॉकिंग अबाउट इट, यू हैव टू से एस द स्टेप्स, how did you come to the answer? But he said, I don't know the steps, I just know the answer, I just jumped to the answer, I don't know how it works, but this is how it is. If you do this answer you will get. That's all I can say. And that was one of his biggest drawback in those times. एग्जैक्टली। ये भी वैदिक मैथमेटिक्स का एक अंग है, ये कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वैदिक मैथ्स है क्या, आपको बताऊं कि दिस इज बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन। कि when you will write some squares, I will show you example. हाँ जी। Very, it's a very simple example. Suppose that we are writing few numbers, 101 square, that is 10201, then 102 square 10404, Mhm. 103 square 10609, and one more 104 square 10816. Now if you will observe this, so what we will find here, it is 1, and what is here, just double of 1 and square. This is double and this is square. So you can find this pattern 2, so double of 2, square of 2, double of 3, square of 3, double of 4, square of 4. So this was the way in which Vedic maths work. So basically, it's a pattern recognition. Every mathematical problem has a certain pattern. Whatever question you are doing, whether it is a word problem or something else, if Mhm. you will try to do more and more question, you will find a pattern. So Okay. basically, हाँ, वैदिक मैथ्स में यही चीजें हैं। बिल्कुल। नवीन जी, आपका क्लास के पहले मेरा एक ही सवाल है, ओके। हाँ हाँ वो है कि मैं आपका क्लास में देख रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा क्लास में फटाफट निकालते हैं। वो कैसा है? वो बुद्धिमान बच्चों को आप शोकेस करते हैं, जैसा कुछ लोग ऐसा गिफ्टेड बच्चे होते हैं, या किसी को भी ऐसा होने का मौका है? किसी को भी ऐसा करने का मौका मिलता है। ये टेक्निक्स हैं ही ऐसी कि दीज आर वेरी मच फास्ट, बहुत इससे एक्यूरेट आंसर आता है, बहुत फास्ट पेस में आता है, ठीक है। तो ये है, इसकी बिल्कुल। मेथड्स बहुत अच्छी है, सो दैट एक अब 10th क्लास का क्वेश्चन है वो एक 7th का भी बच्चा कर सकता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसको आसान लगता है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल चीज कोई नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस, इवन जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है वैदिक में और डाउन होता जाता है।
Absolutely, absolutely. You answered all my questions. It is a great intro for me to get to know. I hope the people will love it also. Friends, what do you think? Let us know. And here is the platform is all for Naveenji to take over. Thank you, Naveenji, for coming and spending time with us. The platform is yours now. You can carry on. Yeah. Yeah, आप चालू कर सकते हैं. Okay. So, first of all, I would like to give a small introduction of Vedic maths. जैसा कि सभी जानते हैं कि ये दिस इज रिलेटेड टू आर अथर्व वेद, बट इसमें जो अथर्व वेद में, जैसा अभी मैंने सर के सामने बात की थी, अथर्व वेद में ये कहाँ से आया, जो आज से करीब 4000 ईयर्स पहले ये माना जाता है कि उस टाइम जो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे इन द फॉर्म ऑफ ऋषिज, ठीक है, तो इन्होंने इस पे मैथ्स पे और सारे साइंस पे बहुत वर्क किया था, बिकॉज कि हमें पहले से ही हमारे यहाँ पूजा पद्धति में 9 प्लैनेट्स थे, तो वी वर नोइंग कि देयर आर 9 प्लैनेट्स मच बिफोर द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप। तो इन द सेम वे ये मैथ्स पे भी, मैथ साइंस जो है, ज्योतिष, इन सारी चीज़ों पे बहुत रिसर्च हुआ था। तो उसके बाद जो है ये, बिकॉज ये संस्कृत लैंग्वेज में था, तो धीरे धीरे संस्कृत लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ इसका यूज़ बहुत कम हो गया, तो लोगों को इसके बारे में फिर नॉलेज जो थी वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गई। फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी भारती कृष्ण जी एक थे, इवन 18th सेंचुरी के एंड में इन्होंने जो है ये संस्कृत टेक्सास पे काफ़ी वर्क किया, एंड वर्क करने के बाद इन्होंने जो है इसके बारे में सारा जो इनकी जितना इन्होंने रिसर्च किया उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसका एक फॉर्मूला है, निखिलम नवतश चरमम दशतः। लेट मी राइट ओवर हियर। नवीन जी, नवीन जी, ये जो स्टॉप वीडियो, नवीन जी, नवीन जी, हाँ जी, और ये मी, हाँ हाँ, ये जो स्टॉप वीडियो है ना, उसके पास एक एरो है, देखना, आप देख रहे हैं? स्टॉप वीडियो बोल के है एक, स्टॉप नहीं, म्यूट है, हाँ स्टॉप वीडियो, ठीक है। अच्छा, इस पे वो उस एरो को ऑन करना, वो एरो के ऊपर क्लिक करना, नॉट ऑन द स्टॉप वीडियो, उसके पास वाला एरो के पास। आई हैव गॉट, अब आई थिंक ठीक हो गया ना? अब वो मिरर में वीडियो बोल के एक बटन होगा, बिल्कुल, हाँ वो उसमें प्रेस किया हुआ है, उसको ऑन ऑफ करके देखना, क्योंकि अभी अब आप जो अब ठीक कर रहे हैं, अब ठीक कर रहे हैं, हाँ ठीक कर रहा है ना, हाँ ठीक है, अब ठीक है, हाँ जय श्री कृष्ण। दिस इज निखिलम नवतश चरमम दशतः। अब ये पढ़ने से हमें कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ है, बट व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? ऑल फ्रॉम 9 and the last from 10. So now we can easily understand कि what does this stands for. ये था निखिलम नवतश चरमम दशतः। तो जो अभी हमारे संस्कृत टेक्सास में लिखा था वो इस फॉर्म में लिखा था, तो nobody can understand how to use this, but when it is given in the form of all from 9 and the last from 10, so we can easily understand ki something we are doing all from 9 and last from 10, and basically what we have to do, we have to subtract. और वैदिक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि यूजिंग अ सिंगल फॉर्मूला, जस्ट लाइक ओवर हियर निखिलम, एक फॉर्मूले की हेल्प से आप कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निखिलम की हेल्प से वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड, we can find square, we can find cube,
And we can also solve so many other kind of problems like integers. Then there are so many other topics which can be covered using this Vinculum method. Similarly, अगर हमें कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सपोज दैट वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 56. So traditional way में क्या होता है, first of all we have to multiply 6 by 5 and 6, then cross, then 5 multiplied by 5 and 6, then we will add. But Vedic में क्या है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के we have so many methods. Just like ये 56 स्क्वायर जो है, अगर आपको सारे मेथड्स पता हैं कि कैसे कैसे होता है, तो दिस कैन बी सॉल्व इन at least 9-10 ways, 9-10 different ways. So this is the main beauty of Vedic mathematics. If you will stuck with some formula, you can apply the alternative formula, and all these methods are very very easy. Just like I think जो मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था स्क्वायर का, वो शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा. मैं एक बार उसको फिर, बिकॉज ये मिरर इमेज आ रही थी, एक बार मैं आपको फिर से वो क्लियर करता हूँ. यू कैन सी दिस इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन. अभी क्या होता है, अगर 107 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो बेसिकली क्या होता है, स्कूल में जो बोला जाता है, देयर इज अ आइडेंटिटी व्हिच मेक इट वेरी इजी, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, दैट स्टैंड्स फॉर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. So when we apply this rule over here, this will become 100 plus 7 square. Then a square means 100 square plus 2ab means 2 times 100 times 7, and plus b square, that means 7 square. Further, when we will solve, this is 10,000 plus 1400 plus 49. Then it comes, thereafter you have to add also. Then you will get 11449. Whereas in Vedic maths, as I told you earlier, what pattern we can see over here? 107 squared. So just double this 7. So 114 and 7 square 49. How we have arrived to this step? You can also easily find. Once we will write just 4 squares, 101, 102, 103 and 104. You can easily recognize what pattern is going on. So basically the main benefit of Vedic maths is that when you start working on with Vedic maths, these formulas, you can yourself invent different kind of methods which are maybe much easier than this one. Let me show you. This I have shown you earlier also, but because of the mirror image, you may not be able to understand what we have done over there. Now see, when we will find this square 10201, 10404, 10609, 10816. If we will try to see the pattern, what are the numbers? 1 more than 100, 2 more than 100, 3 more than 100 and 4 more than 100. What is going on here? When it was 1 more, we are just, the number is double. Here it was 1, so here 2. Here it was 2, so here 4. Here it was 3, so here 6. 1 is this pattern, half of the part, means whatever number is written, you have to write its double. Double of 3 is 6, double of 4 is 8. So in this case, double of 7 is 14. Now the second part, what we can see over here, 0, 1, 0, 4, 0, 9 and 16. These are squares of 1, 2, 3 and 4. That means whatever number is here, just like this is 7 more. So first of all, we have written double of 7 and then square of 7. In the same way, suppose that you have to find 109 square, 11881. You don't have to stop for a single second. So once a child knows the square up to 10, he can find squares up to 100. Similarly, when it is closer to 100,000, 10,000, maybe less or more, we can do it easily. So coming back to the same topic, that a single question
can be solved with the help of multiple methods. So you have a liberty to choose the best one. Thereafter, I'll let you know there are 16 formulas and 13 sub formulas of these Vedic mathematics. This you must be aware about all these methods if you have interest in mathematics. It is quite difficult to write all these names over here. It will consume too much time. So I'll let you know in a brief that there are some word formulas. Just like one of the formula I told you, Nikhilam Navtas Charmam Dashatah, that we were using over there. Then second, one more formula is Yavdunam Tavduni Kritya Vargam Cha Yojjet. Exactly what question we were solving right now, 107 square or 109 square. What we were doing, we were adding this 9 double, or if you will add 109 plus 9, so 118, that means double of 9. So 118 and 81. So basically Yavadunam means whatever is the difference, Tauduni Kritya. If it is more, you have to add that number, just like I have done it here. This was 9 more than 100 because 100 is base. Actually, Nikhilam method we can apply whenever number is closer to base. Base means 10 powers of 10, whether it is 10, 100, 1000, 10,000, whatever number. So here it was 9 more. So Yavdunam Tauduni Kritya means what, अगर ये ज्यादा है तो इसको हमें ऐड करना है. इफ इट इज लेस सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे ये 9 ज्यादा था तो हमने 9 ऐड कर लिया या 9 का डबल कर लिया, एक ही बात है. एंड वर्गम च योज्येत. वर्गम मीन्स स्क्वायर, च मीन्स और, and योज्येत means adjust. So thereafter you have to adjust the square. Square of 9 is 81, that we have adjusted over here. So you can see this pattern is very simple because starting में दिलीपान सर ने इसके बारे में मेरे से पूछा था कि कैसे वीक बच्चा भी इसको कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो डेफिनेटली कर सकता है बिकॉज दिस इज वेरी इजी. अभी आप अगर इसको कंपेयर करेंगे, जो इससे पहले अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, तो होता क्या है, फॉर्मूला आपने जो भी चीज रटी हुई है वो आपको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए याद रहती है. इसके अलावा इसमें जितने भी आज की डेट में मैथ्स में ज्यादातर डिस्कवरी हमारे वैदिक से ही हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, अगर आपको क्यूब रूट निकालना है 21952 का, क्यूब रूट क्या होता है मे बी आपको पता हो. जैसे कोई भी नंबर हमने लिया 12 into 12 into 12, when we are multiplying a number 3 times, that is called cube of 12, that is 1728. In the same way, suppose that we have to find the cube root of 21952. This will be 28. I am just showing you कि इसका आंसर निकल जाता है. लेकिन अभी अगर इसी नंबर में मैंने दो नंबर रब कर दिए 219, सिंस दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो इसको निकालने का कोई ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल वे में कोई मेथड नहीं है. लेकिन वैदिक में आप किसी भी नंबर का ये क्यूब रूट निकाल सकते हो. सिमिलरली एक बहुत कॉमन टॉपिक आता है जो क्लास आई थिंक थर्ड फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी, ये इसमें क्या होता है कि हमें 2 से लेके 11 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है. इसमें भी देयर इज अ नंबर 7 फॉर विच not a particular divisibility test is available. There is a method but that is even quite difficult than कि आप डायरेक्ट 7 से ही चेक कर लो डिवाइड करके प्रॉपर वे. तो हमारे जो स्कूल में या किसी भी बोर्ड में, वेदर इट इज इंडियन सिस्टम सीबीएसई और आईसीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड, कहीं भी 11 से ऊपर कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वैदिक मैथ्स, तो you can solve any number, by any number. Like आप अपना मोबाइल नंबर which is of 10 digits,
उसको आप चेक करना चाहते हो 29 से, 73 से, 45 से, आप इजिली कर सकते हो. वी हैव टेस्ट अवेलेबल. तो बेसिकली वैदिक की नीड सबसे पहले क्या है कि ये फुलफिल करता है हमारा मैथ्स की नॉलेज को. अभी जो हम लोग सीखते हैं ये करने के बाद आप इंजीनियर भी बन गए, आपने पूरे कंट्री में टॉप कर लिया, बट स्टिल आपको ये नहीं पता होगा कि हाउ टू चेक ए नंबर वेदर इट इज डिविजिबल बाय 29 और नॉट, या आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, आप नहीं कर सकते. ऐसी बहुत सारी मैथ्स प्रॉब्लम है. इन a right angle triangle, say when two sides are given, we can calculate the third side easily. But what if only one side is given? You cannot say what will be the other two sides. But Vedic में ऐसे फॉर्मूले जिसमें एक साइड से हम बाकी दोनों साइड बता सकते हैं. अभी रिसेंटली इवन नंबर्स के लिए एक मेथड है विच इज टेकन फ्रॉम वैदिक मैथ्स. तो उसकी हेल्प से आप जरूर इवन नंबर्स का निकाल सकते हैं ट्रिपलेट, बट वो एक ही ट्रिपलेट निकलेगा. जैसे अगर 12 लें तो उसमें 12 के साथ निकलेगा 35, 37. बट ऐसा नहीं है कि 12 से दिस विल बी द ओनली कॉम्बिनेशन. देयर आर सम मोर कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक 12, 16, 20 or 9, 12, 15. So there are so many combinations. So using Vedic maths, you can find all the combination. And when the number is odd, let us select any odd number, say 19. In traditional way, there is no method that we can say what is hypotenuse and what is base. If we want to calculate this, the method we have available is hit and trial. So everywhere you have to write, first of all you have to check by 1, 19 square 361, 1 square 1, 362 which is not a square. Again we will check it by 2, because in Pythagoras theorem this number square plus this number square should be equal to this number square. So this you have to check by hit and trial. 2, then 3, then 4. Every time you have to find this square. Every time you have to find this square. Different numbers 3, 4, 5, 6. Then you have to add. Then you have to find its square root. Square root. So आप देखोगे ये स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है. अब अगर इसी नंबर की बात करें तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 180 and 181. So just imagine if we are trying to solve this particular question by a traditional method. So यहाँ हमने 19 लिया, इधर हमें 1 लेना होगा, अगेन 19 के साथ 2, अगेन 19 के साथ 3, एंड हर स्टेप में हमें इन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट देखना है. तो when we reach to this particular number 180, that means after 180 efforts you will be able to find the correct answer. So if you will compare even this particular method with the help of Vedic maths, you will find yes, this is very very effective, using which I have written this. So once we will start all these classes, so slowly but at a very fast pace, you can also learn all these things. In traditional way, if we are multiplying any two numbers, say 512 into 488, suppose that we are multiplying, answer would be 249856. Now this is right or wrong, we can never say without undergoing the multiplication part. But in Vedic maths we have a method where verbally anybody can say, who's having knowledge, that particular student or teacher or anybody can say whether it is right or wrong. Just like here it is correct. So this is the effectiveness of Vedic maths. So what I think today we will let you know some of the formulas, so that using which you can start doing a little bit. Even you should start doing these formula when you know
कि इसको एक बार आपको आ जाता है तो इसको आपको जो है इसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए रेदर देन प्रैक्टिसिंग ऑन योर ट्रेडिशनल मेथड। इससे क्या होता है आपकी, ये तो हुआ मैथमेटिक्स इंप्रूव होती है, इसके अलावा भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। जस्ट लाइक आपकी जो स्पीड, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, ये सारे बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। आप देखेंगे रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है, आप कोई चीज याद करते हो आपको लंबे समय तक याद रहता है, आप भूलोगे नहीं। तो इसमें हम लोग एक फर्स्ट फॉर्मूले का ही जो हमने सीखा था अभी, निखिलम नवतश चरमम दशतः, दैट वाज ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है फॉर्मूला और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, नाउ दिस स्टैंड्स फॉर all from 9 and the last from 10. So basically we are subtracting. जैसे आपको अगर 3, 4, 5 इसमें आपको लगाना है all from 9 last from 10, 3, 4, 5, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, this number we need to subtract from 9, this number we need to subtract from 9 and the last one we will subtract from 10. So क्या आएगा, 9 minus 3 is 6, 9 minus 4 is 5 and 10 minus 5 is 5. So ये एप्लीकेबिलिटी बता रहा था कि इसमें निखिलम अगर लगाना है तो निखिलम कैसे लगाएंगे और क्या आंसर आएगा। अब ये यूज में कहाँ आता है, यूज में आता है जैसे सपोज दैट आई हैव 1000 rupees in my bank account. Say I have 1000 rupees in my bank account and I have purchased something online which cost 478 rupees 92 paisa. Now how much money will be there in my account after spending this much? Traditional way में क्या होता है, we have to solve from this side, we cannot subtract this, so we will take carry and all this. But in Vedic maths, when one of the here series is 0 and any number you have to subtract, तो simply apply all from 9 and last from 10. So इसमें क्या करते हैं, इस 1 को रिड्यूस कर लेंगे, 0 हो गया तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। एंड देयर आफ्टर अब इन सारे नंबर्स पे निखिलम लगाना है, तो निखिलम मैंने क्या बताया था, इसे 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, सो वी विल गेट 5, अगेन दिस फ्रॉम 9, सो 2, दिस फ्रॉम 9, सो 1, दिस फ्रॉम 9, 0 and this is the last digit, so this we have to subtract from 10, so we will get 8. So 521 rupees and 8 paisa will left in your account. Okay, so this formula is also very useful and in a single line you can write the answer. Generally we subtract from right side, but here you can see that I am subtracting from left side. So in Vedic maths it also enables us to solve so many kinds of operation like subtraction, multiplication, squares from both sides. You can write answer from left to right as well as from right to left. And there is a lot of benefits of using these pattern to write the answer from both the sides, because see your mind is working on both the sides. That what we have to do, we just whenever we are solving some steps, we keep in our mind that what will be the next step. So these all benefits you will get once you will undergo all these methods. Okay, so now I will give you a few more examples. Even if anybody want to write, you can write a number in message. One number I am writing. Say this time we are taking 50,000. And any number, if anybody want to write, you can also write. Otherwise, I will take by myself any number. Okay, let me choose a number. Say 237098.
Suppose that this we have to subtract. Okay, 1342.45. Right. This is another number I will solve. Second number was 1342.45. 1342.45. Now see, here I am just going to write the answer. 48657.55. This is the answer. Now here I will explain also. What I told you, this first number you need to reduce by 1. Just like in the previous question it was 1. So that will become 0. Similarly, here it is 5. So that will, when we reduce 1, we will get 4. So 4 minus 2 is 2. And thereafter we have to apply here Nichilam method. So let us apply Nichilam. 629052, because this number we need to subtract from 9. 9 minus 3 is 6. 9 minus 7 is 2. 9 minus 0 is 9. 9 minus 9 is 0. 9 minus 4 is 5. And last one we have to subtract from 10. So 10 minus 8, that is 2. So this is the answer, and which is correct. One more thing I would like to share, that it is very rare that you, when you are using Vedic method, or you are getting a wrong answer. So it reduces the chance of mistake, because if some mistake is there, you can orally identify that something has went wrong. So this was one of the method. The second method I'll show you. Okay. So here there are a few more formulas, and when you move forward, you will find so many different kind of questions that can be solved using Nichilam. But in addition of Nichilam, we need to use some other methods also. Just like I am going to introduce one, two more methods, and we will work on it in the next session. Just like one is the best friend. That means in Sanskrit it is Param Mitra Ang. It is Param Mitra Ang. That is the best friend. So which numbers are best friends? It is 1 and 9, 2 and 8, 3 and 7, 4 and 6, and 5 and 5. Now see, only you have to remember these 5 combinations. Any two numbers whose sum is 10 are called friend. So it is very simple. Friend of 1 is 9, friend of 9 is 1, friend of 2 is 8, friend of 8 is 2, friend of 3 is 7, friend of 7 is 3. In this way. And there are only 5 friends. So you have no need to learn all these friends or any method. When you will practice, after 2, 3, 4 days, just 4 days, 5 days, you will see these numbers. This will be feeded in your mind. So in the next time directly you have to solve the questions. Okay, and then there is one more formula that is called Ekadhikena Purvena. Later on I will send some text to Dilipan sir, so that he can share with everybody of you. Let me write over here. This is Ekadhikena, means one more than before, you can say.
Ekadikena means one more. So kisse one more? I will show you. If I have written this is represented by a dot. Dot means one more. So what is one more than 0? It is 1. What is one more than 1? That is 2. What is more than 1 more than 5? That is 6. So whenever this is called ekadikena, means any number having this dot is known as one more than that number. So it was 5. So 1 more than 5 is 6. If it is 8, so 1 more than 8 is 9. इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. एक इसमें आता है विनकुलम मेथड. ठीक है, विनकुलम बेसिकली क्या होता है? निगेटिव नंबर्स. इसकी मैं आपको ब्यूटी बताता हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि यू हैव टू राइट अ 2 डिजिट नंबर इन विच वन शुड बी नेगेटिव एंड 1 डिजिट शुड बी पॉजिटिव, कैन वी राइट? नो. Say we are writing 47. When we place this positive sign, both the number will become positive. When we are writing negative sign, both the number will become negative. But in Vedic maths, we can write like this 4 7 bar. This is called vinculum. Vinculum means negative number. So in this way we can write, now this stands for, this is unit digit, this is tens digit. So this is 40 and minus 7. So its value is 33. So here we can represent a number where one digit is negative, other one is positive. Similarly, if we are writing 4 bar 7, that means 10th place is negative. So 40 is negative, minus 40. And 7 is positive, plus 7. So its answer is minus 33. This I am writing in traditional way. Otherwise in Vedic method you can write 3 bar 3 bar. So you can see what a surprising thing is this, that we can write a number where few digits are positive, few digits are negative. Later on I will show you how useful is this method. Using this we can find some bigger cubes, just like 98 cube. Cube means 98 into 98 into 98. By any means nobody can find its answer in single line. But with the help of this Vinculum method and Nikhilum method and one more method, we can write this within a line. So let me show you some more example based on Vinculum. Say we are writing 3, 2, 4, 5, 6. Suppose that we are writing this like, now it means this is positive, this is ones, tens, 100,000, 10,000. So 10,000 digit is positive, then 50 is positive. So that means 30,050. And what are negative? 2,406. So 2,406. If you will subtract, you will get this answer. But in Vedic maths, we don't have to write it like this. Directly we can write what would be the answer. This I will explain on a later stage. Now if you want to solve this, this would be 27644. Even here also, when you want to solve using your traditional way, you have to start from this side. But see, I am writing from this side because I am not subtracting this number from here. Even I am directly applying two rules over here. One is ek nyunena. You can see, just like ekadikena stands for one more. So ek nyunena stands for one less. Nyun means less. So here we are using ek nyunena. You can see this will I will explain you this method on a later stage, but just I am showing how I have arrived to the answer. Wherever the bar is given, we have to apply Nikhilum, and the previous number we have to reduce by 1. So this 3 will become 2. Then here we are using Nikhilum. So this from 9 we will get 7. This from 10 we will get 6.
Again, this we have to reduce by 1 because this is having a bar number. So 5 will become 4. And again here we have to apply Nikhilum. Now in one digit, what we have to do? This is the last one. So we have to subtract from 10. 10 minus 6 is 4. So in this way, I have got this answer from left side. So these all methods are very easy. So now, if you have any question, any doubt, so you can ask. Today, actually, this was just an introduction so that you may know the benefits of Vedic maths. Because in internet and in the form of book, there is very particular things are given. Just like this was all the work was done by Bharti Krishna ji, but Bharti Krishna ji has done research on our Vedas. Actually, it was developed by our Rishi Munis, who were existing around 4 to 5,000 years ago. Okay, so now if you have any questions, anything you want to know about this or something, so you can ask. Absolutely. Navinji, I was seeing it. It is so impressive. Okay. Yeah. I have some question. ये Okay. वैदिक मैथमेटिक्स क्यों बोला जाता है? Means it is in part of our Yeah. Vedas, or how does it work? Can you Yeah. please Yeah. throw me some light? Very nice question. Because it was derived from Vedas. That is from Veda. It is given the name Vedic mathematics. Actually, there are 4 Vedas, so out of which all these mathematical and scientific facts are there in Atharva Veda. Atharva Veda. Okay, Yeah. and another question I have in general, because I'm very curious and I'm watching you. Okay. You are just going crazy with the numbers. Going from left to right, right to left, and those kind of thing. So is means these are part of anywhere. You said about lot of formulas. My मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको देखने में हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है? वो देखने से ही हमें पता चल जाता है। एंड इवन मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो होता क्या ना कि जिसमें जैसे आपको कोई चीज आती है, आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, संस्कृत ऑल्सो। हाँ, So if you want to talk to somebody who also know all these 3 language, so which हाँ, language you will prefer? जो हमें लगेगा सबसे ज्यादा इजी है, मे बी इट इज इंग्लिश और हिंदी, है ना। हाँ, संस्कृत में थोड़ा सा हम बाद में जाएंगे क्योंकि वहां पे अभी इतना अच्छी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इन द सेम वे वैदिक में क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया कि इफ इट इज क्लोजर टू 100,000 10,000, जनरली क्या होता है बच्चों की बुक्स वगैरह में जो आता है यूजिंग आइडेंटिटी, फाइंड आउट द स्क्वायर, फाइंड आउट द क्यूब, तो वो बेस के पास होता है, तो बच्चे को पता होगा दैट इज निखिलम मेथड वी हैव टू यूज। बट इट इज नॉट कि वो आपको निखिलम ही यूज करना है। यू हैव सम ऑल्टरनेटिव मेथड्स आल्सो, बट उसमें एक चीज ये भी होती है कि देयर आर 4 फॉर्मूलाज, तो जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है आप उसका यूज करोगे। ये बिल्कुल। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, या नवीन जी। लाइक आप इतना बच्चे से आप डील करते हैं, आपका स्कूल में, तो क्या कभी द टीचर सेज हे डोंट डू दिस थिंग बिकॉज टीचर डजंट नो अबाउट दीस फार्मूलाज, राइट? इन जनरल, क्या कभी उनको डांट पड़ता है कि प्लीज डोंट डू दोस थिंग्स, जस्ट डू हाउ आई टीच यू? एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसे बहुत से चैलेंजेस आते थे, लेकिन क्या होता है फिर मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला कि बच्चे को उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर जिस कॉन्सेप्ट की टीचर बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना है 24 इंटू 12, क्या आंसर आएगा 288। ठीक है, हाँ जी। अब जिसको 12 का टेबल आता है वो क्या करेगा, 12 टाइम्स 4 48, 4 कैरी, then 12 times 2 24 and 4 that is 28, got the answer in one line he can write। but on the other hand there is a student who don't know the table of 12, तो वो कैसे सॉल्व करेगा? वो पहले 2 से करेगा 48, फिर क्रॉस लगाएगा, 1 से करेगा 24, देन 8 करेगा, तो इट्स अ 3 लाइन प्रोसेस। So which one is correct? Both are correct.
तो Right. बच्चों को भी जब कॉन्फिडेंस, जब बच्चे को सारे इन्स एंड आउट्स मैथ्स के पता होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद डील कर लेता है टीचर के साथ कि व्हाई दिस इज करेक्ट. एंड इन मैथ्स, इफ द मेथड इज करेक्ट, यू कैनॉट से कि नहीं इसका यूज नहीं करना है, इसका करना है. ये, हाँ, ये चीज है कि जैसे कई चीजों का उनके पास है ही नहीं मेथड. फॉर एग्जांपल, आपको अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 21952 का क्यूब रूट निकालना है, Uh-huh. इसका बहुत इजी मेथड है, लेकिन डायरेक्ट आंसर आता है. इफ यू विल राइट 28, योर आंसर विल बी क्रॉस्ड, कि आपने मेथड कहाँ किया, आपने तो कहीं से चीटिंग कर ली है. तो उसके लिए हाँ. मैंने क्या किया कि इसका एक और इसका जो बीच का स्टेप है वो भी हमारे पास मेथड है जिसकी हेल्प से लिख सकते हैं. जैसे इसके अगर फैक्टर लिखने हैं तो बच्चा क्या लिखेगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7, और फिर तीन तीन का ग्रुप बना लेते हैं, तो आ जाएगा 2 into 2 into 7, दैट इज 28. इन दिस वे इसको भी क्यूब क्यूब रूट में लिखेंगे, फिर ये बाहर आ जाएगा 2 into 2 into 7, दैट इज 28. So if a child will write this step, Uh-huh. if he or she will introduce this step, he or she will get full marks. Even teacher cannot identify कि he has used Vedic method. तो हमारे ज़्यादातर, हाँ जी, बिल्कुल. क्या बोलते हैं आपका बच्चों को स्कूल में टीचर्स क्या बोलते हैं? डू दे से वो माय गॉड योर द किड्स आर सो स्मार्ट, क्या बोलते हैं आप उनके नहीं नहीं, ऊपर क्या बोलना? ज़्यादातर तो बहुत इनकरेज करते हैं, बहुत मतलब उनसे हैप्पी रहते हैं कि मतलब एलजेब्रा का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, जिसमें कम से कम 4-5 स्टेप्स लगने हैं, उनको एक लाइन में ओरली बता पा रहा है बच्चा, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादातर टीचर इनकरेज करते हैं. हाँ, कुछ हैं वो लोग इस इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि वो मेरे से फास्ट कैसे कर रहा है बच्चा, राइट, तो ये, राइट. बट ज्यादातर लोग जो अच्छे टीचर हैं, अच्छे स्कूल में, दे अप्रिशिएट. बिल्कुल, बिल्कुल. नवीन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने आके आपका it's so kind of you. You came and poured your heart, you know. Want थैंक to यू सर. highly say thank you for it, what you did, and appreciate it very, very. So if you have knowledge of 16 sutras, another question is coming, Naveen ji. So if we have knowledge of 16 sutras, is it possible to do any and every mathematical calculation or only for specific calculations? Yeah, all kind of calculation you can do, and but Vedic maths is apart calculation. Just like algebra is also a part of mathematics. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा algebra भी cover करता है. It covers the entire algebra. But 16 formulas itself is not sufficient, because मैंने बताया ना कि this 16 formulas were discovered by Bharti Krishna ji. Basically, he has given these 16 formulas because he was able to recognize these 16 formulas only. There are few more formulas that are existing in our Vedas, okay, and their research has to be done. So, and in few years we will definitely find some few other formulas, but three, these are almost sufficient. This can solve your 95% problems of algebra and arithmetic. And apart of algebra and arithmetic, its applications can be used in algebra, calculus, and trigonometry, everywhere. Acha. So you mean to say this mathematical formulas from Vedic mathematics, इसको Yeah. हम algebra calculus भी कर सकते हैं? मैंने सोच रहा था सिर्फ addition subtraction के लिए नहीं करेंगे. नहीं नहीं, मैंने अच्छा. बोला ना, इवन वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो एक बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है, कि द टाइम इन विच यू विल रीड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आर स्टूडेंट कैन आंसर टू क्वेश्चंस, दे कैन सॉल्व इन द टाइम इन विच यू विल जस्ट रीड द क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट इज 12, व्हेन 36 इज एडेड, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड आउट द नंबर. अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आई थिंक यू विल टेक अराउंड 8 to 10 सेकेंड, और इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर विद इन 4 सेकेंड आ जाता है, इंक्लूडिंग द रीडिंग पार्ट. Wow. Incredible, incredible. Naveen ji, thank you very much, friends. Just to say a big thank you to Naveen ji.
for coming in and pouring the heart, friends. See here how the kids are being developed, and it is nothing but a miracle how the kids get developed here. Appreciate it. Hope you are learning too, and आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी समझ में आता है, यही अपना at least our goal. Thank you to Naveen ji for coming and sharing. फ्रेंड्स, आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई धन्यवाद बोलना है, सब आप कमेंट एरिया में करें ताकि नवीन जी को मिल जाए। हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट मंडे के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम। नवीन जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आप श्री सबको भी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम मेरे को दिया। नहीं, आप सर्विस कर रहे हैं। हम वी आर जस्ट आई एम सेइंग you just get ready for one thing, okay? You are going to get lot of blessings for what you are doing. Already you are working with a lot of children, and appreciate what you are doing, okay? Thank you sir. Appreciate. थैंक यू। Jai Sri Krishna, friends. Jai Sri जय Krishna. Yeah, yes. Absolutely. We will talk in detail. Till then, Jai Sri Krishna, Jai Sri Krishna, Jai Sri Krishna.